Hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss the second week of my current affairs. So I hope you all are aware that every Sunday at 3 p.m. we are running this. We are discussing the weekly current affairs. So today we will be discussing the second week. We are discussing. So let us begin with today's class. So am I audible, visible? Is everything fine? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Is everything fine? If yes, then please write yes. So we are starting with the second week, and those who want to watch the previous week, so they can go to our channel, subscribe to the channel, go to the playlist. इसमें जाना नीचे जाओगे, when you go down, scroll down, you will get this weekly current affairs. इसमें view full playlist पे जाना है, and you will get the previous videos. Is my voice clear? Okay. ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है, so you can watch it. इसे मैंने जनवरी से लेकर अभी तक कंप्लीट कवर करा है till my फर्स्ट वीक. ठीक है, so जनवरी का 4 parts, similarly फरवरी का 4 parts, like that we have covered, and today I am going to cover the second week of May. Okay, so let's start with the first question. The first question is where is India's first AI based data center park being established? Bengaluru, Hyderabad, Nava Raipur, Pune. Sushil, please refresh from your side because I think voice is clear. I've checked. Sushil, please refresh from your side because I think where is India's first AI-based data center park being established? So the right answer is Nava Raipur, C, Chhattisgarh. So C is the right answer to this question. Okay. Chhattisgarh's chief minister laid the foundation of AI-based data center park in Sector 22, Nava Raipur. Now it is also called as Atal Nagar, in the name of, in the memory of Shri Atal Bihari Vajpayee ji. Okay. Let's move on to the next one. As per India Justice Report 2025, what is the average number of people being served by one High Court judge? मतलब कहने का मतलब है कि how much percentage of population is there per one High Court judge, according to India Justice Report. And who has released this report? ये भी बताना है. This is important. किसने रिपोर्ट रिलीज की है? So the right answer is option D, 18.7 lakh. And who has released this report? Tata, है ना? So अब देखोगे Tata Trust. So basically, of course, it's a part of Tata Group. So Tata Trust has released this report. And which state is top performer? Which state is top performer as far as judiciary and police is concerned? What is the right answer to this question? Yes, state पूछा जा, state कर्नाटका. ठीक है. So India Justice Report supported by Tata Trust has ranked Karnataka as a top performing larger state in overall justice delivery. So right answer is D. Let's move on further. Who became the first Australian Prime Minister in 21 years to win a second consecutive 3-year term? So उन लोग क्या 3 years का term होता है और दूसरी बार भी उन्होंने जीत लिया. What is the right answer? Australian Prime Minister. So A say Australia and Garam A square. Okay, so the right answer is C. Anthony Albanese. Just to remember it, I'm telling you. Okay. C is the right answer. Yes, Kushaka, you're right. Anthony Albanese has won it for the second time. And a Labour leader, Labour Party se belong karte hain. Okay, that is what you should know. Okay, let's move on to the next one. Which Indian official was recalled from IMF Executive Director position 6 months before the end of the tenure in 2025? मतलब इनका भी 6 महीने बाकी था टेन्योर पूरा होने में, उससे पहले उनको बुला लिया गया IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से. I mean, Indian government withdraw this person. Which person is being talked about?
K. Subramaniam. He had earlier served as ex-Chief Economic Advisor of India also. And he had earlier served as Chief Economic Advisor. B is the right answer to this question. And Krishnamurthy Subramaniam from IMF board. So B is the right answer. Not Raghuram Rajan, no. Right answer is B. K. Subramaniam लिखते हैं, है ना? वो पहले he had earlier served as the Chief Economic Advisor of India also. The next is which female footballer received AIFF Women's Player of the Year Award for 2024-2025? What is the right answer? The right answer is option B, Soumya Gogoloth. So B is the right answer. Na? Okay. Let's move on to the next one. Who won Ashi Sheshwari Memorial Award for photojournalism in 2025? Raghu Rai, M. Palani Kumar, Arko Datta, Atil Loke. What is the right answer? Ashi Sheshwari Memorial Award for photojournalism in 2025. The right answer is M. Palani Kumar. So B is the right answer to this question. Is a Chennai-based photographer. The next is who became the first Indian lawyer to win World Jurist Association Medal of Honor for Child Rights? ये important है, ठीक है, थोड़ा सा याद रख लेना. Yes, option B, Hoover Rebu is the right answer. Yes, Koshagra, you're right. B is the right answer to this question. Let's move on to the next one. Which news agency won a Pulitzer for investigating fentanyl supply chain? Pulitzer is an award which is generally given in the field of journalism. So this news agency has got because it investigated fentanyl supply chain. What is the right answer? Joseph Pulitzer के नाम पर दिया जाता है this award, and from America. The right answer is Reuters. C is the right answer. देखो उसको लिखते हैं Reuter, but pronounce करते हैं ऐसे Reuter. This is the pronunciation Reuter, but it is written as Reuter, ठीक है? But pronounced as Reuter, ठीक है? Friends, Pulitzer Prize, है ना? 5th May की news आप देख सकते हो. So the right answer is C. Let's move on to the next one. Who has been temporarily appointed as India's nominee to the IMF Executive Board after withdrawal of one person, है ना? तो देखो ऑप्शन बी, इनको तो विड्रॉ कर लिया गया था ना. He was withdrawn 6 months before his completion of tenure. 6 months before completion of tenure. ठीक है. So who was sent? Parmeshwaran Iyer. C is the right answer. Yes, he had earlier served in Niti Aayog. ठीक है. Which position आपको बताना है? C is the right answer. Parmeshwaran Iyer, है ना? World Bank Executive Director Parmeshwaran Iyer to represent India at IMF board. So C is the right answer to this question. Okay. Okay, let's move on to the next one. What is significant about India's new rice varieties? DRR Rice 100, Kamla, and Pusa DST Rice 1. What is the right answer? Yes, option C. They are genome edited and climate resilient. Genome edited. So gene editing tool का नाम बताना है इसमें. Gene editing tool which is used to edit the gene. Please tell me. The right answer is, मैंने को कई बार बताया, CRISPR-Cas9.
आई हैव डिस्कस मेनी टाइम्स, ये अक्सर एडिटोरियल में आता है द हिंदू के, ठीक है। आप सर्च करना है गूगल पे जाके क्रिस्पर Cas9 द हिंदू, बस इतना सर्च करना, यू विल गेट अ लॉट ऑफ द हिंदू आर्टिकल्स। दिस इज अ जीन एडिटिंग टूल, ठीक है, which is used to edit the genes or DNA. So you should know it. C is the right answer. ठीक है, CRISPR Cas9 कहते हैं. Okay, let's move on to the next one. Which Chinese player became the first from his country to win World Snooker Championship? Snooker समझते हो? वो एक ग्रीन कलर का बोर्ड होता है, उस पे खेला जाता है. I'm sure you must have seen, right? So which Chinese player has become the first to do so? बताइए. The right answer is Zhao Jintong. So C is the right answer. ठीक है. So yeah, this is actually called as snooker. Okay, the next is who has been recently elected as new German Chancellor. ये भी important है, very important. Because Olaf Scholz ने हट गया था ना, he had left, and now we are having the new German Chancellor. What is the name? Yes, Kushakra, right. Frederick Merz, you are right. D is the right answer. ये old thing, earlier one, and he is the new one, है ना? So D is the right answer. ये कब 6 मई को उन्होंने ऑफिस लिया ना, 2025 को. Frederick Merz. So D is the right answer to this question. Let's move on to the next one. President Draupadi Murmu actually will अब तो ये visit कर चुकी, became the first Indian president to visit this temple. और I hope you are aware, इस पर सुप्रीम कोर्ट में केस भी हुआ था 2018-19 में. there are lot of judgments associated with that. Which temple is being talked about and in which state this temple is? मैंने आपको हिंट भी दे दिया. 2018 में आई थिंक जजमेंट आया था, या 19 में. इस टेम्पल से रिलेटेड there was some regulation regarding temple entry, and against that the people filed petition in Supreme Court. Sabrimala temple, B is the right answer. It is in the state of Kerala. Okay, Sabrimala Ayyappa temple है ना, it is in Kerala. तो थोड़ा सा पढ़िएगा, go and find out. आप ऐसे गूगल पे जाके सर्च करिएगा साबरीमाला केस. साबरीमाला केस सर्च करोगे विकिपीडिया पे या बहुत सारे द हिंदू न्यूज़पेपर पर आर्टिकल मिल जाएगी. 2018 as far as I could remember, और 19 में जजमेंट था. ठीक है, so B is the right answer to this question. The next is named the operation launched by Indian Armed Forces targeting 9 terror camps across Pakistan and Pakistan occupied Kashmir. ये तो पता होगा सबको, I'm sure, like this every child knows. तो मेरे ख्याल से इतना आसान सवाल आएगा भी नहीं, but still you should know, of course. The right answer is Operation Sindoor. A is the right answer. So this you should be knowing about. Yes. So let's move on further. हो सकता है डेट्स वगैरह पूछ ले, एग्जैक्ट डेट्स. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप 7 मई था ना, डेट एक बार चेक कर लीजिएगा एग्जैक्ट डेट को. Yesterday's mock as well. Okay. The next is because he mock test वगैरह तो आएगा ही. अच्छा एक चीज बताओ, Operation Sindoor was launched by India. What was the name of the operation launched by Pakistan? का नाम क्या था? Because this can be also be asked. Anyone? वो भी पूछ सकते हैं वो. चलो होमवर्क है, आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क. In response to Operation Sindoor, what was the name of the operation launched by Pakistan? This can also be asked in the exam. So it's a homework. Go and find out. And once the class is over, नीचे comment में लिखिएगा. Let's move on to the next one. Which of the following Indian airports introduced first 360-degree virtual navigation map 8 passengers transit? मतलब क्या होता है, कई बार बहुत सारे एयरपोर्ट बहुत बड़ा साइज का होता है, तो उसमें पैसेंजर को मूव करें समझ में नहीं आता किधर जाना किधर नहीं जाना, तो उसके लिए मैप वगैरह बनाया गया. यस कुशाग्रा, यू वर राइट. आपने सही जवाब दिया, जो इससे पहले था.
Which of the following Indian airports introduced country's first 360-degree virtual navigation aid map to aid passenger transit? So the right answer is IGI Airport, Delhi. C is the right answer. Okay. Terminal 3 of Delhi. Actually जो IGI एयरपोर्ट का सबसे बड़ा टर्मिनल है वो T3 टर्मिनल है, ठीक है. एक शायद T2 भी है और एक T1 भी है, बट द मोस्ट प्रोमिनेंट वन इज T3 टर्मिनल, जो सबसे लार्जेस्ट टर्मिनल है IGI एयरपोर्ट का. इसमें ठीक है इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह भी आती है मोस्टली, और कुछ आई थिंक डोमेस्टिक्स भी आती है. सो इसी का 360 डिग्री वर्चुअल नेविगेशन सिस्टम टू असिस्ट पैसेंजर्स, ठीक है, ये आपको बताना चाहिए. इसमें आप जाओगे ना तो आप देखोगे ये पूरा बता देंगे कि आपको इधर जाओगे तो यहाँ एग्जिट पर निकलोगे, इधर जाओगे तो कहाँ जाओगे, समथिंग लाइक दैट, है ना. ओके. The next one is which of the following companies recently received Indian government's approval to offer satellite internet services after nearly 3-year wait? ये भी काफी न्यूज में था. And this is manufactured by, I mean, this is who's the owner of this internet providing firm? Starlink ओनर का नाम बताइए. Yes, हर्ष and कुशाग्रा both are right. Starlink के ओनर का नाम क्या है? Elon Musk. Yes. अच्छा, सिमिलरली अमेजोन की जो फाउंडर है जेफ बेजोस, है ना, ये अमेजोन के फाउंडर है. अमेजोन ने भी लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? इंटरनेट सर्विस, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस, उसका नाम क्या है? सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस लॉन्च्ड बाय जेफ बेजोस, अमेजोन. क्यूपर एटलस 1, ठीक है. नहीं, ब्लू ओरिजिन जो आप बोले, अच्छा यू गॉट कंफ्यूज. देखो ब्लू ओरिजिन जो है ना वो जेफ बेजोस की स्पेस एजेंसी है, जैसे एलॉन मस्क का स्पेस एक्स है ना, राइट, समथिंग सिमिलर टू दैट. ब्लू ओरिजिन इज ऑफ जेफ बेजोस, स्पेस एजेंसी है ये, प्राइवेट स्पेस एजेंसी. मैं अभी इंटरनेट की बात करता. स्टारलिंक इज अ सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस, ठीक है. सिमिलरली अमेजोन का जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस है उसका नाम है क्यूपर एटलस 1. ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, बिकॉज ऑफ कोर्स यू माइट गेट कंफ्यूज, सकता है एग्जाम में ऐसे दे दें ब्लू ओरिजिन भी दें, दूसरा ऑप्शन क्यूपर एटलस 1 दे दें, यू गेट कंफ्यूज. यू हैव टू बी क्रिस्टल क्लियर, ठीक है. ओके, है ना. एलॉन मस्क स्टारलिंक टू लॉन्च इंडिया, है ना. और देखो इनका जो है क्यूपर एटलस 1, ये KA01 लिखते हैं, ठीक है, या प्रोजेक्ट क्यूपर लिखेंगे ऐसे, ठीक है. The next is what so US government has decided proposed to change the name of Persian Gulf when Donald Trump visited Saudi Arabia. तो पर्शियन गल्फ का नाम क्या करने जा रहे हैं? तो देखो एक्चुअली क्या है, पर्शियन गल्फ है ना, तो पर्शिया किसका ओल्ड नेम है? पर्शिया is actually an old name of Iran, and I hope you all are aware that US has some issues with Iran. इतना तो पता होगा. तो ये चाहते हैं कि नाम बदलते कुछ और नाम रख दे. So they'll put the name as Arabian Gulf, है ना, Gulf of Arabia, Arabian Gulf. Let me see. Oh sorry, option A, Gulf of Arabia, not Arabian Gulf, ठीक है. A is the right answer, ठीक है. पर लेकिन बात तो सेम ही होगी ना, अरेबियन गल्फ बोलो, गल्फ ऑफ अरेबिया बोलो. आई थिंक बोथ विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है. A and B both will be the right answer. पर्शियन गल्फ है अरेबियन गल्फ. देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, गूगल मैप में देख लेते हैं. देखो गूगल मैप ने पर्शियन गल्फ लिखा है और ब्रैकेट में लिखा अरेबियन गल्फ, ठीक है. तो अरेबियन गल्फ का मतलब B would be the right answer. बट मेरे ख्याल से ऑप्शन A would also be correct. बट चलो जो गूगल मैप में इन लोगों ने लिखा है वही मानते हैं. पर्शियन गल्फ पुराना नाम था, नाउ दे आर पुटिंग इट एज अरेबियन गल्फ. ओके, और ये आई होप यू आर अवेयर. अच्छा, ये मैं स्ट्रेट बता रहा हूँ, ये स्ट्रेट का नाम क्या है, बता सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. यहाँ पे ओमान सी है ना, सी ऑफ ओमान कहते हैं, ओमान सी. और यहाँ पे अरेबियन गल्फ है, इसको कनेक्ट करता है ये स्टेट. स्टेट ऑफ व्हाट? उस स्टेट का नाम बताना है. वेरी इंपॉर्टेंट. स्टेट ऑफ हॉर्मुज, HORMUZ. यस कुशाग्रा, वेरी गुड. और ये काफी न्यूज में अभी भी रिसेंटली, बिकॉज इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट इज हैपनिंग
In that context, also Strait of Hormuz is very much in the news, so you should know it. Okay. The next is, which Indian city was recently declared country's first beggar-free city? Yes, Harsh and Kushagra both were right. Strait of Hormuz, right? First beggar-free city कौन से इंडियन शहर को डिक्लेयर किया गया? The right answer is Indore. C is the right answer, है ना? इंदौर काफी ahead रहता है, like cleaning में भी and other things में भी, है ना? They are rehabilitating 5,000 beggars and enrolling children in schools. Very good. Great. C is the right answer. Yes. Sharma, Ananya Singh, you both are right. Okay. The next one is, what is the name of the first indigenously built anti-submarine warfare shallow watercraft? ये एक ship है. Anti-submarine यानी it can destroy the submarine. इसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जैसे ship को, मतलब जो सबमरीन है किसी एनिमी की सबमरीन उस पर अटैक कर सकता है. So उसका नाम बताना है. इंडिजिनसली मतलब मेड इन इंडिया है, ये अपने ही कंट्री में बना है, डिलीवर्ड टू इंडियन नेवी. व्हाट इज दैट कॉल्ड? INS अर्नाला. ठीक है, इज द राइट आंसर, है ना? लिखा हो कहीं पे, है ना? और ये जितने भी क्लास ऑफ सबमरीन है, ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और गार्जियन रीच शिपबिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है. ठीक है, दैट इज व्हाट यू शुड नो. अभी जो रीसेंट वन लॉन्च हुआ है उसका नाम INS अर्नाला. 88% इंडिजिनस कंटेंट है, मतलब 12% वी हैव टेकन द हेल्प ऑफ अदर कंट्रीज आल्सो. ठीक है, let's move on further. Who has recently been elected as the first American Pope and what did name he take? ये तो कई बार डिस्कशन हुआ है, we have discussed so many times. जो earlier Pope थे उनकी डेथ हो गई, that is why there was need to have a new Pope and for the first time अमेरिका से Pope आए हैं, है ना? ऑप्शन बी, है ना? Pope Leo 14, Cardinal Robert Francis Prevost. Yes, Kushagra and Harsh both are right. B is the right answer. From Chicago. ठीक है, और कहाँ बैठते हैं लोग? Where is the seat of Pope? सीट कहाँ पर है? तो इटली में एक जगह है रोम. ठीक है, रोम एक सिटी है, इसके अंदर एक कंट्री है, उस कंट्री का नाम है वेटिकन सिटी, जो कि सिटी नहीं है, वो कंट्री है. ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, बट दैट इज द केस. दिस इज द स्मॉलेस्ट कंट्री व्हिच इज स्मॉलर देन अ सिटी, बट इट इज कॉल्ड एज वेटिकन सिटी, बट इट इज अ कंट्री. ठीक है, और यहीं वो बैठते हैं. और आपने कभी सुना होगा एंशिएंट सिविलाइजेशन में एक रोमन एम्पायर हुआ करता था. आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड. उसका सीट वही रोम में था. दैट वाज द रोम द पोप यूज्ड टू सिट इन ऑल. तो वहीं से वो परंपरा है, दैट रोम कॉन्सेप्ट. एंड चर्च हैड अ लॉट ऑफ पावर्स इन रोमन एम्पायर टाइम. सो ठीक है. Okay, the next one is, which American university is set to open first US campus in India under new UGC rules? ये तो पता होना चाहिए. IIT. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन सी, Illinois Institute of Technology. IIT इसका भी नाम है, but that is not that IIT. C is the right answer. Yes, Kushagra, you are right. C is the right answer. The next is, according to Nitin Gadkari, India's rank among world's vehicle manufacturer is first, second, third, fourth. What is the right answer? Third, not second, third. ठीक है, पहले फोर्थ था, so we have beaten Japan. ठीक है, तो चाइना यूएस के बाद थर्ड हो गया इंडिया का. Now earlier we were fourth, but we have beaten Japan, so now we are third. ठीक है, याद रखिएगा. किसी ने सेकंड बताया, किसी ने फोर्थ बताया, पर थर्ड किसी ने नहीं बताया. So C is the right answer. ठीक है. The next is India State of Forest report. ये भी काफी important report आती है हर 2 years पर. Every 2 years they come up with the report. India's geographical areas under forest and tree cover. What percentage of India's geographical area is under forest and tree cover? मिला करके बोथ. Yes, the right answer is 25.17%, है ना, टोटल, जो कि 21.76% फॉरेस्ट कवर है और ट्री कवर है 3.41%. Who releases the report?
फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून, एक मिनट उनका नाम देख लेते हैं. ISFR is released by, क्या नाम है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया. हाँ, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया. कहाँ पे लिख दो, रुक जाओ. फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून. देहरादून, ठीक है. The next one is, which Japanese bank agreed to acquire 20% stake in India's Yes Bank in 2025? The right answer is option C. And Sumitomo Mitsui Banking Corporation. C is the right answer. SMBC. Okay. Yes, the right answer is C. Yes, Kushagra, right. You are right. The right answer. The next is, who won men's 200-meter race at UAE Athletics Grand Prix in 2025? Grand Prix मतलब कार रेस है ना, जैसे देखो ग्रैंड प्री, और मोटो जीपी लिखा है तो बाइक रेस को जनरली कहते हैं ना. ग्रैंड प्री लिखा है, फॉर्मूला 1 लिखा, दीज आर कार रेस. ठीक है. The right answer is the अनिमेश काजूर, है ना. एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा, ये एथलीट से रिलेटेड है. सॉरी, यहाँ पे एथलीट लिखा था, दिस इज नॉट अ कार रेस. ठीक है. अनिमेश काजूर इज द राइट आंसर. आई डिडंट चेक इट. ग्रैंड प्री जनरली कार रेस के लिए होता है, बट यहाँ पर एथलेटिक्स के लिए लिखा था, सो इट इज नॉट कार रेस. ठीक है. So the right answer is the अनिमेश काजूर. आप देख सकते हो ये दिस वन. ठीक है, इज अनिमेश काजूर, है ना, 200 मीटर रेस में. So the right answer is D. Okay. Let's move on to the next one. What is the theme of International Nurse Day? अच्छा, International Nurse Day कब मनाया जाता है? When do we celebrate and in whose memory? देखो 2021 CLAT, if you see the paper, they had asked 2 places where they had asked days and themes. 2 जगह पूछा था. So prominent days and themes you should know. इंटरनेशनल नर्स डे आई थिंक 12 मई को होता है ना. इन whose memory we celebrate? और इसका भी आंसर बताओ. थीम. So here the theme is option B. Our nurses, our future, caring for nurses strengthens economies. B is the right answer. 12th मई को एक्चुअली फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थडे है. ठीक है. She is considered as first modern nurse या फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग कहा जाता है, एंड लेडी विद द लैम्प भी कहते हैं. ठीक है. So that is what you should know. हाँ, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, very good. So in her memory actually International Nurse Day is being celebrated. B is the right answer. The next is, who was nominated as executive chairman of NALSA? ये मैंने बताया, second senior most judge होते हैं. Second senior most SC judge is the executive chairman of NALSA. The right answer is Justice Suryakant. Of course, logically speaking, yes, Kushagra, you're right. C is the right answer, है ना. तो जो पैटर्न इन चीफ होते हैं वो सीजीआई होते हैं, और जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं सेकंड सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं. ठीक है, आफ्टर सीजीआई. सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट. ओके. मैंने बताया है, मैंने आई हैव मेड अ वीडियो ऑन नालसा वेयर आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द लीगल सर्विसेज एक्ट, लीगल सर्विसेज डे. तो आप देखिएगा, नालसा काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. सो गो एंड रीड अबाउट दिस एज वेल. The next one is, where was the new 60-feet statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj inaugurated? Will Justice Suryakant be next CJI? Yes, Kushagra. In November, Justice B.R. Gavai is going to retire, and the next one is Justice Suryakant will be the CJI. Yes, you are right. And I think he will be almost for more than 1.5 years. Yeah, roughly around 2 years के आसपास रहेंगे. आप देख लीजिएगा, उनका भी टेन्योर अच्छा खासा लंबा होगा. The right answer is C is the right answer. ठीक है. हाँ, सिंधुदुर्ग है ना, राजकोट फोर्ट है सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र में एक जगह है. So of course you all are aware that of course the answer should be Maharashtra, because Chhatrapati Shivaji Maharaj belong to Maharashtra, है ना. The next one is, which of the following dam is poised to become world's tallest upon completion? What is the right answer? ये सब में चाइना काफी आगे है. ठीक है. So right answer is option C. Shuangjiangkou Dam
पता नहीं क्या, I don't know the pronunciation, but आप पढ़ लेना. Shuangjiangkao. So C is the right answer. Okay. The next is new digital payment facility launched by LIC introduced what? The right answer is WhatsApp bot. B is the right answer. Okay. Premium payments. The next one is in which state Adani deployed India's first hydrogen-powered mining trucks. Hydrogen-powered मतलब कि it will not be emitting carbon, so it will be comparatively better, है ना? The right answer is, अच्छा आप लोग लॉजिक लगा ली, गुजरात नहीं, छत्तीसगढ़. सी इज द राइट आंसर. यस कुशाग्रा, यू राइट, है ना? Adani's hydrogen fuel cell trucks for mining operation gets rolling. ये आप फोटो देख सकते हो, ठीक है. The next is where is 72nd Miss World pageant inaugural event being held? Yes, important है. Anu was the winner of Miss World. हैदराबाद. यस, ये तो काफी फेमस हुआ था. यस कुशाग्रा, गौरव, हर्ष, यू आर राइट. हु वाज द विनर? कहां से बिलोंग करती थी विनर? समवन फ्रॉम थाईलैंड. वेरी गुड. हाँ, इनका नाम है सुजाता चोंगसरी फ्रॉम थाईलैंड. प्लीज ट्राई टू रिमेंबर. ऐसे याद रखना ना, एससी सुप्रीम कोर्ट, एससी है ना, एससी से ये सुजाता चोंगसरी, ठीक है. जस्ट रिमेंबर इट. Let's move on to the next one. What is the primary role of NASA ISRO radar satellite mission? वही निसार की बात हो रही है. NASA ISRO synthetic aperture radar, which both the countries will be launching. NASA is of US space agency and ISRO is Indian government space agency. तो मार्स एक्सप्लोरेशन तो नहीं होगा, ओशन करंट्स भी नहीं होगा. राइट आंसर बी, क्लाइमेट मॉनिटरिंग से रिलेटेड, ठीक है. मार्स उस तो नहीं है ना, देखो मैं दिखाता हूँ. Joint project between NASA and ISRO to develop and launch a dual frequency synthetic aperture radar and Earth observation satellite. It will be first radar imaging satellite to use dual. ये हो गया to observe and understand natural process on Earth, है ना, like Antarctic ice के बारे में रिसर्च करेंगे. So climate monitoring कह सकते हो, ठीक है. Would be the best answer. B is the right answer, ठीक है ना. Okay. ये अभी लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन जब इट इज लॉन्च एंड इट बिकम्स वेरी मच इन द न्यूज़, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा. तो ये मेरे ख्याल से this will be important for this year, I guess. तो चलो इस पे भी अगर डिस्कशन होगा तो डिटेल में we'll discuss, ठीक है. So this is all about today's class, guys. एक चीज और है, आज 8 बजे today at 8 PM we'll be having a static GK revision series. Please do join there. So please subscribe to the channel, press the like button, share this video. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.